भटकल के तरबियत एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाला शम्स पीयू कॉलेज के आज के प्रेस मीट में आपका हम इस्तकबाल करते हैं। दरअसल 20 को एक भटकल साइंस फेयर होने जा रहा है, जो दूसरा साइंस फेयर है। इससे पहले 10 साल पहले हम लोग एक साइंस फेयर किए थे एजे एकेडमी के तहत उनके साथ मिलकर। तो इस बार दूसरा जो साइंस फेयर होने जा रहा है वो 20 को है। उस सिलसिले में ब्रीफ करने के लिए आज आप तमाम को हम यहाँ पर दावत दिए हैं। आप हमारी दावत को कबूल करके आप इस प्रेस मीट में शामिल हुए। आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस प्रेस मीट के डिटेल्स और साइंस फेयर के डिटेल्स के ताल्लुक से जनाब प्रिंसिपल साहब जनाब लियाकत अली साहब आपके सामने उसका ब्रीफिंग करेंगे। सो मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो साइंस फेयर का जो ब्रीफिंग करें आपके साथ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एजुकेशन जो है सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक की लिमिटेड है। तो हम शम्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के तरफ से हम ऐसा एक इनिशिएशन लेना चाहते थे कि हमारे बच्चे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है आजकल उसको आइडेंटिफाई करें, उसको एक रिसर्च का माइंडसेट में अप्रोच करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। तो इस मकसद के लिए 2 महीने पहले हम इस काम शुरू किए थे। So the objective of conducting science fair is not to exhibit or to just display few science models. The objective is in order to identify the problems our society is facing and in order to give a solution as an outcome of the research. So we have invited schools as well as colleges of Bhatkal Taluk. Around 115 teams have registered. Out of 115 teams registered, we have selected, we have mentored them, we have guided them on how to proceed with the research. So the objective is not to have a science model or science expo, is to conduct a science fair based on research. So with this objective, Shams Pre-University College in association with AJ Academy of Research and Development from Raichur have taken this initiation, and day after tomorrow, which is on Thursday, 46 teams across Bhatkal are going to submit their report. They are going to present their findings. So we invite all the institutions as well as our parents and general public in order to visit the fair, to interact and to make sure we encourage the students and that we can able to reach the outcome, which is we have to generate some scientists from this Bhatkal who will work for the betterment of the society. This is the only intention. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of us in order to make this event a grand success, as well as our students in order to continue their research and be a resourceful person for the society in upcoming years. Thank you so much. जी, इसमें कुछ मैं देखिए हमारा ये इनॉग्रेशन जो होगा 9:30 को हमारा साइंस फेयर का इनॉग्रेशन होगा, जो 11:30 से 3 बजे तक वो अलग अलग मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों के लिए रहेगा। उसके बाद 3 से 4:30 तक औरतों के लिए रहेगा, फिर उसके बाद फिर मर्दों के लिए रहेगा। इस तरह भटकल के तमाम स्कूल से के तलबा से और उनके हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से हम गुजारिश करते हैं कि वो अपने तलबा को इस एग्ज़िबिशन में भेजें। ये जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये एग्ज़िबिशन नहीं है, ये जो है रिसर्च बेस, आप रिसर्च करके बच्चे उनका रिज़ल्ट को यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसमें साइंटिस्ट का अवार्ड देते हैं, बडिंग साइंटिस्ट, एमर्जिंग साइंटिस्ट, इस तरह के बच्चों को इंकरेज करने के लिए उनको साइंटिस्ट का नाम से अवार्ड से नवाजा जाएगा। सो इसलिए हम आप तमाम पब्लिक से भी और तमाम इदारों के ज़िम्मेदारान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं
اور اس میں اپنے طلباء کو بھیجیں اور اس کو ریسرچ بیس ایگزیبیشن کا ایک نیا طریقہ ایک نیا اندازہ ہے. آپ کامنلی آپ دیکھتے ہیں کہ ماڈلس بناتے لا کے رکھ دیتے ہیں, کوئی پرانے ماڈلس رہتے ہیں لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے, یہ بلکہ 3-4 مہینے سے کچھ ماڈل پہ کچھ کام پہ ریسرچ کر رہے ہیں بچے ہمارے. اس ریسرچ بیس جو ہے رزلٹ انشاءاللہ 20 نومبر کو آئے گا. تو ہم جو ہے یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایک نئے طریقے کو دیکھیں, اپنائیں, اس کے بعد آگے ایک ریسرچ کرنے کا ان کے اندر صلاحیت کو ڈیولپ کریں. بس اسی کے ساتھ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس پریس میٹ میں آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ. ایک بیٹ ایڈ کر لیجیے کہیں پہ چاہیے. دیکھیے جو ریسرچ ہے ابھی آج کل عوام میں پبلک میں جو پرابلمس, مثالی طور پہ بچوں کو ہم ایسے ایک اسائنمنٹ دے تھے کہ بٹکل میں جو بارش کے ٹائم میں جو فلڈ ہوتا ہے, جو گلیوں میں جو پانی جو ڈرین نہیں ہو پاتا ہے, یہ ایک پرابلم ہے بٹکل کا. اس کا سولوشن آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کن لوگوں سے ملیں گے, کیسا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اس ڈیٹا کے حساب سے آپ کا پروپوزل کیا رہے گا. تو کافی جگہ میں ایسے پروپوزل جو ہے گورنمنٹ پالیسیز بھی بن چکے ہیں. ان پریویس ایئرس ہم اگر دیکھیں گے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو پروجیکٹ جو رہتا ہے ریسرچ بیس, اس کے اوپر گورنمنٹ پالیسیز بنتا ہے. تو یہ مقصد کے ساتھ جو ہے ہم بچوں کو انکریج کرنا چاہتے تھے. تو وہی ہم کافی 2 مہینے سے کام ہوا ہے. امید ہے کہ ہمارے بچے انشاءاللہ ایک پروڈکٹیو آؤٹ کم کے ساتھ آئیں گے. سو جسٹ ٹو بریف یو اباؤٹ دا ایونٹ اسکیڈیول, دا فائنل event which is the exhibition or science fair will be on Thursday 20th of November inshallah, where we have a time slot for the institutions to visit in order to bring their students from morning 11 a.m. to 1 p.m. followed by for the ladies we have a slot from 2 p.m. to 3:30 p.m. and for the gents we have a slot from 3:30 p.m. to 5 p.m. So we request all the institutions of Bachkal in order to please take part in this. Kindly encourage your students in order to visit our campus, to interact with those students who have done their research. May this research help us in order to make this Bachkal town a progressive and a model town for the whole nation. Thank you so much.